नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं विपिन आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। मां नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। आपका वीएम क्लासेस में हार्दिक वंदन अभिनंदन है। चलिए आइए हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपके स्क्रीन के ऊपर। टॉपिक कौन से चल रहा है? टर्बो मशीनरी। टर्बो। ओके, so shall we proceed? Yes, move ahead. So here the question of the day is to be asked here. In a reaction turbine, in a reaction turbine, the steam pressure is 40 kilopascal. The steam pressure is how much? 40 किलो पास्कल। यहाँ पे Vg की वैल्यू दिया हुआ है हमें 3.9934 मीटर क्यूब पर किलोग्राम and dryness fraction is 0.92 at a stage for the flow rate of for the flow rate of 30,000 kilogram per hour. The stage develops 850 kilowatt. The stage develops 850 kilowatt. The turbine runs at the turbine runs at 3000 rpm and velocity of flow is 0.68 times the lead velocity. The outlet angles of both the outlet angles of both stator and rotor blades, stator and rotor blades are 22. Determine the mean rotor diameter, mean rotor diameter and height of blades. Height of blades। ये हमारा क्वेश्चन है ब्यूटीफुल सर। चलिए इसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास रहेगा। तो हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ Vg 3.9934 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। X is equal to 0.92, mass flow rate 3000 kilogram per hour, power 850 kilowatt, speed
30,000 RPM, VF 0.68 685 U, अल्फा पाई दोनों बराबर हैं कितना 22 डिग्री के। ओके, पावर इज इक्वल टू होता है साथियों मास फ्लो रेट वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू times of u. So here we have tan alpha Vf1 upon Vw1 implies Vw1 कितना हो जाएगा Vf1 by tan 22 degree 2.475 Vf1. Now here Vf1 और Vf2 दोनों आपस में बराबर है यहाँ पे Vw2 is equal to Vf1 into 2.475 minus u. Here 2.475 Vf1 minus u. Now the power is equal to mass flow rate times whirling velocity 1, whirling velocity 2 multiplied over the mean blade velocity u. So mass flow rate into 2.475 Vf1 plus 2.475 Vf1 minus u. Here mass flow rate into 4.95 Vf1 minus u multiplied with u into mass flow rate into 4.95 minus 0.684 minus u. तो यहाँ पे हमें वैल्यू हो जाएगी प्राप्त मास फ्लो रेट मल्टीप्लाइड विथ 2.366 u into u. Here 850 multiplied with 10 cube 2.366 into 8.33 into u square. Mean blade velocity is equal to 207.67 meter per second, and formula of mean blade velocity is to be pi dmn by 60. यहाँ पे मीन डायमीटर की वैल्यू हो जानी है इज इक्वल टू 60 इंटू 207.67 अपॉन आई इंटू 3000 1.322 meter. If mean rotor diameter is 1.322 meter, so the flow velocity is to be 0.68 into u 141.22 meter per second. Specific volume of steam specific volume of steam XVG V1 3.67 meter cube per kilogram. Mass flow rate V1 5 times of dm hb Vf1. Here the value is to be calculated
of HB is equal to 30.6 divided by 585.62, 0.0522 meter is equal to 52.2 in mm. Alright, next question. Here, question है, in a stage of a stage of an impulse turbine provided with a single provided with a single row wheel. The mean diameter of the blade, the mean diameter of the blade ring is 800 mm and the speed of rotation is and the speed of rotation is speed of rotation is 3000 rpm. The steam issues from the steam issues from the nozzles with a nozzles with a velocity of 300 meter per second and the puzzle angle is 20. The rotor blades are equiangular equiangular and the blades friction factor is and the blades friction factor is 0.86. What is the power developed? What is the power developed? What is the power developed in the bleeding in the bleeding when the axial thrust of the blades when the axial thrust of the blade friction factor is friction factor is 0.86 and what is the power developed? What is the power developed in the bleeding when the axial thrust of when the axial thrust of blades is 140 newtons. Okay,
पूरा प्रयास रहेगा। एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर देते हैं आप सभी के लिए। In a stage of impulse turbine provides with a single row wheel. The mean diameter of blade ring is 800 millimeter and speed of rotation is 3000 rpm. The steam issues from nozzle with a velocity of 300 meter per second and the nozzle angle is 20. The rotor blades are equiangular and the blade friction is 0.86. What is the power developed in the bleeding when the axial thrust of the blade is 140 newtons? Mean diameter 800 millimeter, speed 3000 rpm and V1 300 meter per second, alpha 20 degree. Okay, so here we have the solution for that. First we have to make out the diagram for our question is to be here. इम्पल्स वो बनाने जा रहे हैं ना। इम्पल्स टरबाइन का ये वेलोसिटी ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। Easy. VW2 over here notations is to be much more important thing. It is the mean velocity u. Here the angle is to be beta 1, beta 2, alpha 1, alpha 2. Sometimes we have to take alpha theta 5 beta. Nozzle inlet and nozzle inlet के बाद जो है क्या होगा, ब्लेड आउटलेट एंगल। नोजल के बाद जो है ब्लेड से ही ना इम्पैक्ट होगा आपका साथियों। Here the flow velocity Vf1, here the relative velocity Vr1, here the V1 absolute velocity Vr2 over here, then after that V2 and Vf2. Okay, all the velocity count is to be here. Now the given data, mean diameter is equal to 800 mm, speed 3000 rpm, V1 300 meter per second, alpha 20 degree, beta 1 is equal to beta 2 kb 0.86 and axial thrust 140 newton. Alright, then after that we have the mean blade velocity is to be pi dmn upon 60, pi 0.83 thousand upon 60, 125.6 meter per second. Tan of beta 1 is equal to V1 sin f alpha V1 cosine alpha minus u. So the value is to be 300 sin 20, 300 cos 20 minus 125.6. So here we have the beta 1 is equal to beta 2 value is to be 33.3 degree. Alright, now from diagram हमको प्राप्त होगा V1 sin of alpha, VR1 sin of beta, ट्रिग्नोमेट्री है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो y 102.61
VR1 sine of 33.3. So VR1 value is to be 187 meter per second. Now AB is equal to 0.86. VR2 is equal to 0.86 into VR1. So value is to be 160.82 meter per second. Okay, so PA is equal to mass flow rate times VR1 sine beta 1 minus VR2 sine beta 2, as beta 1 is equal to beta 2. Over here, mass flow rate into 187 into sine of 33.3, 1 minus 0.86. So the mass flow rate is equal to 9.75 kilogram per second. Delta BW VR2 or beta 2 plus VR1 cos beta 1. So we have VR1 cos beta 1 1 plus KB power developed is equal to mass flow rate change of whirling velocity into mean blade velocity, putting the value 9.75 into 290.71 into 125.6 into 10 raised to power minus 3. The final value is to be 355.84 किलोवाट. इजी साथियों, इतना ही रखते हैं आप सभी का सेशन. एक काम करना है आपको, वीएम क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करना है. थैंक यू. यू हैव अ वंडरफुल. जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए. थैंक यू साथी.